Hi friends, this is Prabir Kundu. I welcome all of you in my this video series on emotional intelligence and I am sure कि आप सभी लोग जो है ना इसको enjoy भी कर रहे होंगे और अपने आप को develop भी कर रहे होंगे. In this episode of my emotional intelligence video series, मैं आज आपके साथ fourth pillar of emotional intelligence, that is empathy, 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 I am going to discuss with all of you. Empathy is absolutely a very strong attribute that one professional or one person should have hold, to make him distinctive in this VUCA world and to be, prosper and to progress well in this VUCA world. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पैथी है क्या. ठीक है नहीं. इम्पैथी जो है इट इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग द फीलिंग, द इंटेंसिटी ऑफ द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन विथ हुम यू आर इन ए कॉन्टैक्ट. उसकी तीव्रता को समझना, उसके मन के अंदर में क्या चल रहा है, हलचल चल रहा है, उस चीज को समझना, कितना इंटेंसिटी का अंदर हलचल चल रहा है उसको समझना, एंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आर आल्सो गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स ऑन द पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन. उसको फील करना, रियलाइज करना कि एज इफ वो इंसिडेंट्स अपने साथ ही हुआ, इट हैज हैपेंड विथ यू ओनली, that is known as a empathy. To make you understand empathy better, I will cite here 3 distinctive example. Be attentive, ध्यान से सुनिए. Suppose you are a father और आपका जो लड़का है, he is an educated person, he had given an interview to some company for the job. Presently he is unemployed और उसको जहाँ पे इंटरव्यू दिया था, जहाँ से उसको कॉल लेटर आने का उम्मीद था, वहाँ से भी कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इज एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड. टुडे few minutes ago your son got an information over phone that जो वो इंटरव्यू दिया था, he got selected in this job, in that interview, and within weeks time he has to join in that job. तो वो क्या होएगा? He will be absolutely excited, he will be absolutely happy and he will be absolutely in the joyous mood. और हो सकता है दौड़ते दौड़ते वो आपको पापा के पास, पापा पापा मुझे नौकरी मिल गया, पापा पापा मुझे नौकरी मिल गया, and he may hug you very tightly. So what is expected from Papa? Papa will also hug him very tightly, and start jumping with him, start dancing with him, and start feeling the intensity of the joy, the impulse, the happiness of his son. That is known as empathy. One classical example. Second incident, you got information that आपके किसी रिलेटिव का, किसी का जो है वो अनटाइमली यंग एज में एक्सीडेंट की वजह से उनका डेथ हो गया है. यू रश टू देयर प्लेस और देखा उधर चारों ओर इट इज एब्सोल्युटली माउर्निंग बिकॉज इट इज ए अनटाइमली डेथ. एवरीबडी इज शॉक्ड, द डेड बॉडी इज लाइंग ओवर देयर. तो वहाँ पहुँच करके उनके दर्द को समझना, टू अंडरस्टैंड देयर द सैडनेस, टू अंडरस्टैंड देयर डीप पेन बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड डेथ, और वी स्टैंड विद देम, उनके साथ मौजूद रहना, उनके साथ खड़े रहना, उनको सपोर्ट करना इज एन एम्पैथी. The third example, you are a sales head of some company और आप देख रहे हैं कि आपका एक रीजनल मैनेजर जो है he is struggling for doing his 100% target, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, he is not able to do the 100% budget. और आप उसको देख रहे हैं, you are watching that, वो आपसे he is unable to speak to you, he is unable to ask help from you also because of some, he may have a fear with you or he may have an apprehension with you, but you understand that and you are in a position that if you help he can hit the target, लेकिन वो आपसे बोल नहीं पा रहा है. तो
at that stage of time, if you stand with that your regional manager and help to do the budget without saying anything to him and give all kind of help, that is known as the empathy. Because आपने उसके तकलीफ को महसूस किया, आपने उसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट जो भी कुछ चल रहा है उसके दिल में, उसको आपने महसूस किया, रीड किया, उसको उसके प्रॉब्लम को आपने समझा, एंड यू स्टैंड विद देम इन देयर थिक टाइम. सो दैट इज नोन एज ए एम्पैथी. तो यू अंडरस्टैंड द एम्पैथी. 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एम्पैथी इज. फीलिंग द रियलाइजेशन of either happiness or joy or excitement or sadness or grief, or you are in a critical problem, standing with the person, understanding the pain, understanding the trauma, understanding the grievances, understanding the happiness and sharing with them is known as empathy. इसके साथ मैं एक चीज और भी जोड़ूंगा कि ये जो पहले केस में कि लड़के को जैसे इंफॉर्मेशन मिला दैट ही गॉट द जॉब एंड रन टुवर्ड्स हिज पापा एंड ही हग्ड हिम, एंड पापा आल्सो डिड द सेम काइंड ऑफ हगिंग, द सेम टाइट हगिंग, एंड ही रिसिप्रोकेटेड विद द सेम इंटेंसिटी. इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैशन. आपने उसकी ज़रूरत को समझा, उसके एक्साइटमेंट को महसूस किया, उसके दर्द को महसूस किया, और उसके बिना बोले हुए, विदाउट टेलिंग हिम, विदाउट आस्किंग हिम हेल्प, यू एक्सटेंडेड whatever help possible, you extended in the same fashion, you reacted and distributed his feeling, his griefs, his excitement, his joy. That is known as a compassion. So empathy plus compassion is one of the best art. Could you understand? I cited the 3 examples. Now the question is this: what is the fun of empathy? Empathy समझ के हमको क्या होगा? हम क्या उखाड़ लेंगे empathy समझ के? Yes, you must have realized कि ये जो 3 examples I have discussed with you, these are the 3 extremes of the life. इंसान का एक्सट्रीम क्या होता है? उसका सुख होता है. जब इंसान सुखी मूड में होता है, जब इंसान को कुछ बढ़िया चीज मिल जाता है एंड ही वांटेड टू शेयर विथ समथिंग, एंड इफ यू आर देयर to share their joy, to share their happiness, to share their excitement, then you develop a special bonding with that kind of person or with that kind of group of person, and you establish you write a new chapter of special relationship with those kind of the people. इसी तरह से अगर आप किसी के दुख में जाकर के उसके दुख को बांटते हैं, उसके दुख के समय में उसके साथ खड़े होते हैं और उसके बिना मांगे ही उसको जो भी मदद चाहिए होता है तो आप करते हैं, तो क्या होता है? वहाँ से you started writing a new history of relationship with those type of person, a new bonding of relationship with those kind of person, and you become very close to the heart of the person. And in the third case, when the boss stand with the regional manager without asking and help to him, और उसको जा करके उसको मदद करता है, उसको टारगेट को करने में उसको मदद देता है, तो क्या होता है? That regional manager becomes very close to his boss. He became a dedicated person of the boss, and the boss and the regional manager both, they started writing a new history of the relationship, a strong bonding from that point of time. And you rule on the heart of the people, on the mind of the people. That is the distinctive and clear advantage of the empathy. You may not have a big education, you could not have studied to a higher level. Maybe you are a high school pass only or some basic knowledge, maybe you are a simple graduate. Lekin if you have the empathy, if you have the art of compassion, आपने समझ लिया दूसरे को तकलीफों को, दूसरे की खुशियों को, दूसरे की प्रॉब्लम को अपना समझना, अपने तरह से फील करना, और उनको जो भी मदद हो सकता है उनको मदद करना, मतलब empathy plus compassion, आप सबके क्लोज हो जाएंगे, आप सबके दिलों के क्लोज हो जाएंगे, सबके अप्रिशिएबल, you will be appreciable for each and everybody, and you will enjoy a different altogether status. और जो भी उनके साथ आपका ऐसा बॉन्डिंग हो जाएगा, ऐसा स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगा सालों साल इन फ्यूचर के समय में कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, और you will altogether command a high sort of respect, and which will be helpful to you for any kind of progress, for any kind of success, for any kind of accomplishment. So this is the advantage of empathy, and this is the advantage of
compassion. So empathy plus compassion is the most, desired skill to be successful in this VUCA world.